बर्न योर कॉस्ट। ओके, तो पैरेलली क्या होता है ना, उसके साथ सर्विस टर्मिनेशंस भी होते हैं। अगर आप एक एप्लीकेशन पे काम करते हो, उस कंपनी में अगर दूसरा कोई सेम एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप क्या करते हो ना, एक नोटिस पीरियड पहले से ही सेट करके रखते हो। 6 मंथ की वो नोटिस पीरियड रहती है, वो उस टाइम में सर्विस टर्मिनेट होनी चाहिए और हमने जो प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलप किया है वो लाइव हो जाएगी। इसलिए सो दैट इज द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आफ्टर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट विल हैपन, आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा। वहां पे लास्ट पेज जो है ना, क्लोजिंग, वहां पे 2 टाइप है। एंड दी वर्क means I'll tell you what is the type of that. Finalize all the activities and formally close the project. तो क्लोजिंग प्रोजेक्ट मतलब आपका अगर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन अगर सक्सेसफुल हो, तब भी वो क्या होता है, क्लोज होता है, वो लाइव हो जाता है, वो कस्टमर को हम दिखा सकते हैं। अगर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पनीर की सब्जी में अगर आपका मीट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पनीर की सब्जी। तो प्रोजेक्ट का वैसे ही होता है कि अगर प्रोजेक्ट इट विल रन आउट ऑफ द बजट ना, देन यू हैव टू टर्मिनेट योर प्रोजेक्ट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। लाइक उसी के पैरेलल में क्या होता है, एक दूसरा प्रोजेक्ट आता है, सारे एक्टिविटीज यहाँ पे टर्मिनेट किए जाते हैं, वो सारे एक्टिविटीज दूसरे प्रोजेक्ट में मूव ऑन हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जो इंटरव्यू देते हो ना, तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जब आप कॉलेज कंप्लीट करके बाहर जाते हो, तो आई गिव यू द इंटरव्यू लिंक्स एज वेल, वेयर यू कैन प्रिपेयर द बेस्ट बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। ओके, so there is 2 way. One is the coding in the Java, C, CPP, Sharp, Python. There is a many way for the coding, but there is another way which is Power BI. So I'll explain more about Power BI, how you can go further with it, how you can start your career in your journey. So yeah, can you go next slide? So this is the PMO definition and key. What is the PMO? PMO is a group within business or organization whose main job is to set standards for work and process amongst internal project managers. जो भी कोई कोडिंग्स वगैरह करता है ना, लाइक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन लो, उसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन दिया है, लेट्स से एग्जांपल कैलकुलेटर, यू आर डूइंग द कोडिंग इन बैकग्राउंड में, बट जो उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, उसका प्लान इनिशिएट करता है, ऐप कौन सा डिजाइन होने वाला है, डेवलप होने वाला है, उसकी टाइमलाइन क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो ये सब कौन देखता है, पीएमओ, राइट। सो देयर आर 5 बेसिक फेजेस अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन. So I'll not give you the corporate example. With help of that, parallelly I'll give you the real time example as well. Okay. So what is initiation? पीएमओ का फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, प्रोजेक्ट इनिशिएट करना. जब भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो, तो उस टाइम आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एलोकेट किया जाता है. You will give an insight into the global landscape of multinational companies and the role of project management office has given us a clear understanding of the skills, challenges and opportunities that lie ahead for us in these fields. I will also express our heartfelt thanks to the management of SNBP and our respected principal Sir Dr. Sudhir Atwankar Sir for allowing us to organize this event and creating a platform for us to interact with industry experts. Also, I would like to extend my thanks to our beloved Training and Placement Officer, Mrs. Shushma Pingle ma'am, and our CEO, Mrs. Gauri Shirode ma'am. A special thanks to all the active participation. We hope today's session has been beneficial for all of you. And non-teaching staff, including Maushis, for helping us through the arrangement of the programs. Once again, a big thank you.